We made a perfect plan to conquer Umlingla Pass, which is at 19,024 feet from the sea level. But destiny, it had a different plan. What went wrong? That suspense will kill you. The calm before the storm. Today is day 9 of our cycling adventure, and this place is Hanle. Last night we stayed in this homestay which belongs to the Sarpanch of Hanle. There that kind honor provided us the food and stay. It was such an amazing hospitality. Today is a special day because two more cyclists, one is from Hisar, second is from Sonipat, they are going to join us. Last night they stayed there in Chumthang, and today in the afternoon they will reach here in Hanle. Now the point is whether we will do the climb to Umlingla top today itself or we will start for that ride tomorrow. That will depends on their condition once they arrive here. The search of Kalsang homestay. So it was 10 o'clock. We just left from that homestay where we stayed last night. Now there is another homestay which is known as Kalsang, Kalsang, where we will go and wait for them to arrive. Let's see what happens, because we were not aware of the location of this new homestay. So when I tried calling them, both the numbers were not having the incoming calls. Now the things became very difficult. We tried asking from the locals and finding it, but there was no success. We are inside the city searching for a homestay named Kalsang. Don't know where it is, so we'll check with the locals. But you will not find people around. Oh my god, lots of tourists are here. We tried asking from the locals and finding it, but there was no success. Kalsang homestay किधर है? KLSANG, Kalsang. कलसंग कहाँ था यार? हम बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं। वो उधर बोर्ड पे नहीं देखा आपने? पूरा अच्छा, सब हाँ। सब का उधर एक बोर्ड पे पूरा नाम दिया हुआ है, एरो देके ओके, वहाँ पे चेक करना था ना। ऐसे देखा। याद नहीं आता ना, अचानक पूछ लेता है तो वो बोर्ड लगा हुआ पूरा एरो एरो से भरा होगा। अच्छा उसके ऊपर उसका सब उधर ही होगा बस। ओके, चेक करते हैं। जस्ट आगे। ठीक है। This is the hospital Hanle where we came last night, and that doctor, she took us to the house of that Panchayat Panch, Sarpanch of the Gram Panchayat, and he allowed us to stay there with a nominal price. Hanle is not having the infrastructure to handle so many tourists. Moreover, they are not professional. The things are just going on. So the problem is, suddenly they had started getting lots of tourist rush over here, and they are not prepared. Neither they were trained or something. So they are facing problem in handling it. They need to learn. See, all small houses has been converted to a homestay. And this is when I came to know about two important things about Hanle city. One, no petrol availability. So in Hanle there is no petrol pump. Locals are selling the petrol at 140, 150 rupee per liter. And now it is a shortage. They don't have. So come prepared. That is the only advice. They all are waiting for the fuel because they are not getting it. Two, Hanle has got only 4G network, but that is really very quick. We are going to this homestay which is known as Kalsang. Very basic, I believe, but charges are very high. 2,500, 3,000 rupee per person, I mean per room. So they have put a signboard over here. So the name of ours is not there. That name is not there. Somehow I was able to connect with the owner of the Kalsang homestay through a WhatsApp call. He sent me the location on WhatsApp. When we checked on the map, the homestay was around 2.5 kilometers from our location. So with the help of Google Maps, we made it to that place. I don't know where from the GPS has took us to reach.
जुले फाइनली पहुंच ही गए हाँ. Meeting the Kolsang family. The owner of this homestay looks like a good person. I wanted to have a salt tea, so they made it for us. Me and Tushar, we both were sitting there and waiting for our two other group members to arrive. Tushar wanted some privacy, so he took a separate room for himself. I shared the room with Sandeep. There were two rooms booked by Nishant, but I didn't occupy any of them as Nishant is traveling with his family and I wanted his wife to choose a room of her choice. The team reunites. Nishant and Sandeep, they arrived around 3:50 p.m. Oh, see who is here. Kya haal hai Sandeep ji? Hello ji. Hello. Good to see you finally. Yeah, good to see you. Finally, I can say the same thing. एक दिन आगे तो चले हम आपसे. हाँ, आपने थोड़ा कोई शॉर्टकट मार लिया. था तो नहीं शॉर्टकट वैसे वो. मेहनत तो उतनी लगी हमें. ये कैसे है सर? आइए जी. ये ठीक है. मेरी तो हो गई है पूरी. मेरी हो. मतलब उमलिंगला हो. यही मदीना, यही उमलिंगला है बस. यही सब बस. ठीक है, मुझे नहीं जाना और कहीं आगे. नहीं उमलिंगला मेरे बैग लेके जाओ. मत्था टेकवा जाओ. You will find out. विंड्स थोड़ी अरे पूछो. उसके बाद तो विंड्स एकदम कुछ है भी नहीं फ्रूट पे पानी वानी के लिए कुछ भी नहीं एकदम रेगिस्तान. क्या करूं. मुझे बोला टेंट लेके आओ कैंपिंग करूंगा फिर किया एक दिन भी कैंपिंग नहीं. एक दिन किया 2 स्लीपिंग बैग है टेंट है मैट्रेस है सब और ऊपर से एक टायर ट्यूब है रखी है अंदर लेके चल रहा हूँ मैं. किया है. अब रोज नहीं सोया जाता टेंट. यहीं छोड़ दो, बेच देते हैं यहीं पे. नहीं, मैं तो ले ही जाऊंगा. पूछ लो. अब तो लोड हो जाएगा सब कुछ. फिर तो चंडीगढ़ उतरेगा. हैं? क्या प्लान है? ऐसे करते हैं. कल सुबह चलो. विल स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग का अर्ली 5 मॉर्निंग. बजे स्टार्ट कर दो. डन. क्योंकि रिस्क नहीं लेना. आई थिंक थोड़ा रूट भी ऐसा होगा कुछ है भी नहीं और सब जो गए होंगे वो आज काम नहीं कर रहा. वेलकम वेलकम. मेरे को 15 मिनट हो गए यहाँ पे आए हुए. हेलो. इधर मैं दिखाता हूँ. या भाई साहब पता नहीं कहाँ से. Because we made it one day in advance, so this day became a resting day after a continuous cycling for 9 days straight. We sat together and from that time onwards, we kept planning about this once in a lifetime adventure of climbing to 19,024 feet from the sea level to Umlingla top. he'll accompany us and with family. फिर वो 100 ग्राम कैसे. उमलिंगला ऊपर चढ़ना था यार. जितना हो सके शेड करना है वेट को. मैं तो सोच रहा हूँ कल कपड़े वपड़े उतार भी देता हूँ साले और कम हो जाएगा. चलो नहीं डाल लेंगे. ये खुद घर जाएंगे ना तो पिंक कब हो जाएंगे. पिंक काउबॉय. The perfect plan. So when we were planning it, it was sounding like a perfect plan. तो अगर हम 9:30 से 6 घंटे हो गए आपके 3:30. तो कल अगर हम 9:30 बजे चिसुमले पहुंचते हैं और वहाँ से अगर हम क्लाइंब करना शुरू करते हैं 6 hours I'm taking the worst case scenario including rest और 6 hours में if we come down right तो मुझे ऐसा लगता है 3:30 या 3 बजे के बीच में अगर हम चिसुमले 3:30 से 4 लगेगा. नहीं then don't add half an hour क्योंकि इससे माइंडसेट बदल जाएगा. क्योंकि जैसे ही 4 बजेगा ना 9:30 में आप 6 घंटे जोड़ोगे 3:30 हो गए. बस इतना ही है. क्योंकि मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ा है. 25 किलोमीटर है. 5 की एवरेज से भी आप क्लाइंब करोगे ना आप पहुंच जाओगे 40 मिनट्स डिसेंट के. 45 मिनट्स. Anybody need any kind of medicine? ना भाई कुछ नहीं चाहिए. अभी तो कुछ नहीं. रखना है कुछ किस लिए चाहिए? अभी के लिए. भाई साहब मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए. आपको रखना है कुछ अगर रख लो. ORS चाहिए किसी को? ना जी ना. वायरस मेरे पास 2 पैकेट तो है. मेरा पॉइंट ये है संदीप लेट्स कीप इट हार्ड क्योंकि मैं चाहता हूँ 3:30 बजे वहाँ से चिसुमले पहुँच गए ना तो फिर हमारे पास ये confidence लेकिन होगा. हमें ना वहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल है उनको देखते रहना. उसके लिए तो 1 घंटा एक्स्ट्रा रख लिया ना. मतलब अभी हम यहाँ खड़े होके वी कैन नॉट से कि वो वहाँ पे डिसाइड होगा कि कैसा क्लाइमेट है कैसा ऑक्सीजन लेवल है एवरीबॉडी. मान लेते हैं चलो हम 4 बजे आपकी बात मान लेते हैं 4 बजे से नीचे तो क्या ही होगा. 4 बजे अगर वहाँ पे पहुँचते तो यहाँ पहुँचने में हमें 8 बज जाएगी. हमने उनको बता दिया हम रूम ऑक्यूपाई करेंगे. अभी नहीं. बता हम जिस स्पीड में गए थे उसमें वापस नहीं आ पाएंगे ना. आते तो ज्यादा स्पीड से आएंगे. 2 रीजन है. हमें टेरेन का पता होगा
कॉन्फिडेंस होता है, जाते वक्त कम रहेगा, आते वक्त ज़्यादा रहेगा। अब थोड़ा लेट नाइट भी हुआ तो मैनेज हो जाएगा, कल तो गाड़ी पहुंच रहेगी साथ में, हाँ। वो पीछे उसको कर दूंगा, हमारे पीछे चल हेडलाइट दिखाता है। और हमारे पास हेडलाइट्स वैसे इतनी है नहीं किसी के पास। मेरे पास एक हेडबैंड है मेरे पास भी एक हेडबैंड है। और तुषार के पास भी है। अरे मेरे पास भी लाइट तो गाड़ी बस में ठीक रखते है, हैं। बस ठीक है। वो 4 जो लाइटें हैं ना, उससे काम चला लेंगे। और कल हम ज़्यादा वापस- हुआ तो गाड़ी को पीछे रख लेंगे अपने, ये हेडलाइट दिखाता रहेगा। एंड आई बिलीव इट विल बी गुड इनफ कि हम यहाँ पे 8 बजे भी पहुँच जाएंगे ना, इट्स गुड इनफ। एंड अगर 8 बजे ख़त्म करते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है चिसमुले में रुकने की कोई वजह है नहीं, until unless bad weather or something। नहीं, अगर बैड वेदर नहीं है, कोई फॉल नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, एंड कोई ऑक्सीजन की वजह से कोई बिल्कुल ही ऐसा हुआ कि क्लाइंब करने में नहीं कैपेबल हुआ, आई थिंक वी ऑल विल बी तो डूइंग। गाड़ी बैकअप के लिए आई है, उसको बिठाया घर में। अगर ऐसा कुछ हुआ, हमारे पास गाड़ी है, साइकिल को गाड़ी 2 चक्कर भी लगा सकती है रिक्वायर्ड, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। मतलब वो चिसुमले तो छोड़ ही सकता है ना, तो मतलब साइकिल के व्हील्स निकाल के गाड़ी में रख देंगे और अपना सीधा गाड़ी चिसुमले में रहेगी ना, गाड़ी ऊपर भी चलेगी, तो जाएगी। उमलिंगला। वो बुला रहे, खाना लग गया, चलो। All right, thank you. What do you say? Doesn't it sound like a perfect plan? But you never know what destiny has in its pocket for you. But let me give you a spoiler. Whatever we planned, it failed. It did not work. What happened? How did it happen? This is a story for tomorrow. That night, we had our dinner early and went to sleep early because tomorrow it is going to be one of the toughest adventure. Tomorrow's epic challenge. The journey to Umlingla Pass will start tomorrow early in the morning. For those who don't know, Umlingla Pass is world's highest motorable pass at a height of 19,024 feet. So we are going to attempt this on a bicycle, something which very few people have done before. So don't miss tomorrow's episode. Tomorrow's episode is going to be absolutely mind-blowing. So let's meet tomorrow with the story of a new day of climbing to Umlingla Pass. I suggest you be the part of my journey and support my this world tour by subscribing to this channel, World Wanderer Cycling on a Budget, and hit the bell icon so that you get all the notifications of my videos first. There is a join button also. You can click on that and join this channel, become a member. If you have missed yesterday's incredible 94-kilometer journey from Mahe to Hanle with a health scare, dust storm, shepherd dog attack, then watch that video. I'm giving you the link here. After this, go and watch it. And those who have supported me on my journey, their names are given here. Please say them thank you on my behalf. That's all for now. Take care of yourself. We will meet soon with the story of a new day tomorrow. Till then, take care. Bye bye.